So, hello, Supriya ma'am. Welcome to Hindustan Times. Hi. And I just saw your Home Shanti trailer, a very Hi. interesting title, a very interesting trailer. So, can you just sum up all about what it is about exactly? Well, I'll say it is a story of a very normal middle class family, which I think, all of us experience all the while, of little problems that occur, little relationships that are there. You are the no joke between a brother and a sister, the little uh, I would say homely quarrels between a husband and a wife, or a child and a mother, or that kind of a normal family whose aspiration is just to have a house. That is the main life's aspiration, and how they have, they have to work towards it. And I think this is a very relatable subject, because I think all of us at some point have always wanted to have a house, and have had to really work towards it, always. I mean, it's very strange, but I remember when Pankaj and myself were looking for a house, it was always that we were just this much short of the money. हमें अगर घर अच्छा लगता था, तो बस वो इतना सा ही कम हमारे पास पैसा था, तो हम नहीं ले पाते थे. So this was a continuous struggle over so many years that we also went through. So I think everybody does go through it, and that's why I think this show is very relatable, very very like peeping into your own house or your neighbor's house. It's like that. That was my next question. That have you faced a similar situation? But now you're telling me that you already faced a similar situation. Yeah, I think, and for a very long time, when we bought our first house, it was always that there's nothing to do. We have to buy, ab ghar to chahiye kind of thing. And my father-in-law always used to say, don't rent it, because आप rent देते हो तो वो पैसा, it's better that you give it in an installment rather than rent it, because वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा. So we actually did that. When we took our loans, whatever money would have maybe gone in renting a place was what we paid as installments. So that was how we got. तो हर एक वक्त हमारा यही था, when you have a second, when you were just looking for a place till you actually eventually settle down. So I think every young couple, we were then very young, so that time every young couple goes through this kind of a thing, and especially for a person who, in this show, as we have seen, for a person who is of a certain age, at that time, to start aspiring to have a house of your own, you can understand the kind of issues that and problems that can occur. And that's how the house becomes such an important identity of yours, because we all struggle to get it. अगर आसानी से मिल जाता ना, तो हमें उसकी अहमियत नहीं समझ में आती. We would not have known it. Did you actually get your dream home, या कुछ compromises कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हुआ? I personally feel the house we live in now is very, very close to my dream home. So it's okay. I mean, at a place like Bombay, to have a house like this, I'm very fortunate. And I really feel that I'm very blessed that my master has given that to me. But I mean, your actual dream house is always maybe very different, or you always aspire for more. वो कहते हैं ना कि एक मिल जाए तो और लगता है अरे अरे छोटा गार्डन भी होता, अरे अरे थोड़ा, तो वैसे वाली बात है. But I think this is pretty much what a house should, I mean, I would have wanted. Yes. Okay, ma'am. In the trailer, we see that you all have like tiny differences. Okay, yeah, this is my desire, this is my demand. So when you were buying your own house, so everyone had their own desire. So last में final से किसका होता है? I don't think हमारे में वैसा था. It was basically कि we had to like the place and it had to be affordable. So the affordable part, it was never. So we always thought that likeable हो जाए. I believe in one thing that I think even Pankaj ji does in the same thing, that when you enter a house na, you should feel at home. अगर वो रॉ है, अगर नहीं बना हुआ है, अगर कुछ भी है, पर अगर आप कोई घर देखने जाते हो खरीदने के लिए या कुछ, बिकॉज
बनाने का तो बम्बई में वो नहीं मिलता. In Home Shanti तो we are making a house, but in Bombay you are basically buying a house. So when you buy, I always feel कि enter करते ही ये अपना है ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, I'm at peace, I'm at home. Because home is where your peace is, according to me. So that is what it is. तो मैं इसीलिए तो हमेशा यही होता था. इट वॉज नॉट कि हम सबकी अपनी अपनी डिमांड्स थी. जब हमने ये वाला लिया तो हमारे बच्चे सना और रूहान दोनों काफी छोटे थे, तो उन्हें यही एक्साइटमेंट था कि उनको अपना अपना कमरा मिल गया. So, you know, in the earlier house, they were sharing a room. This house, they had their individual rooms. So that was the biggest high. So they were not really interested in anything else. But I think every person has a certain desire. Every person has a want, and which is, I think, beautifully woven in this show of ours. कि हर एक की कोई ना कोई desire होती है. बचपन से लेके हम कुछ ना कुछ सोचते जरूर. You know, we keep thinking about your life, your future, so you always have these small desires. Ma'am, इसमें you and Manoj Pawar ji are coming together again. Last year में मिमी में भी आप साथ में थे as husband and wife. और उसी साल में लास्ट ईयर राम प्रसाद की 13वीं में भी आप साथ में थे, बट एज अ मदर एंड सन. ये बड़ा स्ट्रेंज है, ऐसा कहाँ होता है? इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? हाउ डू यू जेल के एक फिल्म में मदर सन प्ले कर रहे हैं, दूसरे फिल्म में फिर से हस्बैंड एंड वाइफ प्ले कर रहे हैं, तो हाउ इजी इज दैट फॉर यू? We are actors, so वो बहुत फर्क पड़ जाता है कि because we are so used to playing different characters. So when I'm playing Sarla Joshi as I am in Home Shanti, I'm not myself. And when I was playing Amma in Ram Prasad Ki 13वीं, I was not myself. It was so Manoj ji was not Manoj ji as I know him. It was my son, or here, you know, Umesh Joshi. So we play characters, and also one thing which happens is when you know each other as people, then the ease of acting is so much कि आप कुछ भी कर सकते हैं. कोई भी कैरेक्टर, कोई भी रिलेशनशिप पे करने में आपको आसानी हो जाती है, because you know the person by, you know, on an individual level. So that was a very, and working with Manoj has always been great fun because of that. I've known him for a long time. We have a basic understanding of the same, so we don't have, you know, those awkward complications जैसे actors में हो सकते हैं, वैसा कुछ नहीं होता. So it's always great fun. And in this show especially, Ram Prasad में हमारी relationship ऐसी थी कि we had, you know, tension about it. But then my character in Ram Prasad was so different and so within herself that she didn't really have to interact with people. मैम, जैसे हंसा इज लाइक सबसे फेवरेट टॉप पे आता है, उसके बाद फिर ढंकोर बा आता है ऑफ गोलियों की रासलीला. तो ऐसा कोई आपका कैरेक्टर है विच यू टेक होम एज वेल? आपके बच्चे गए कि मैम आप अभी भी सेट पे नहीं हो, घर आ गए हो, तो कभी आप लेकर जाते हो उस कैरेक्टर को घर पे? नहीं. I leave all my characters at their shooting. वहीं पे रहते हैं सारे के सारे. No, because when I come home to be myself, you know. So अब मुझे घर में मेरे अपने घर में कोई क्या कहते हैं, आई एम ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल मदर वुड बी ना. तो हर एक जन मुझे कंप्लेन करता है, हर एक जन मुझे फायर, तो मैं वापस अगर घर पे कोई भी एक कैरेक्टर लेके आ जाऊं तो उनको मुझे ही नहीं समझ में आएगा मैं करूं क्या भी, you know, because it is so difficult. I always come home as a mother, a wife, a housemaker. That's all I am. मैम, जैसे यू एंड मनोज पावा जी हैव लाइक emerged as a new middle age couple. बहुत सारी फिल्मों में एक साथ आ रहे हैं, जैसे नीना गुप्ता और गजराज राव जी आते हैं एक साथ. जी. तो आपको लगता है ओटीटी के आने से मतलब केवल यंगस्टर्स को ही नहीं, सारे पॉलिश्ड एक्टर्स को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, व्हिच वाज हाँ, I think more than platform only. मुझे ऐसा लगता है OTT के आने से एक possibility of different kind of roles, different kind of stories मिल गई है हम सबको करने के लिए. और मुझे लगता है वो एक बहुत important और बहुत इंटरेस्टिंग, हम एक्टर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है.
बिकॉज हम लोग काफी अलग अलग रोल्स कर सकते हैं, अलग अलग कहानियां कह सकते हैं। और आजकल का जो ऑडियंस है ना, दे वांट टू हियर स्टोरीज, they don't want to see, they don't want to have only big things happening. It has to, I feel the story content is very important in today's viewer, for today's viewer. So that is what I think we are being able to do because of the OTT platform, because there you can experiment, आप अलग चीजें कर सकते हो, और आपको वो प्रेशर ऑफ लिसनिंग टू 1000 पीपल नहीं होता है, यू नो। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक टाइम और प्लेटफॉर्म है हम सब एक्टर्स के लिए, चाहे वो एज कोई भी हो। मुझे लगता है मिडिल एज, ओल्ड एज, यंग एज की बात इसमें नहीं इतनी आती बेटा, जितनी कैरेक्टर्स, काइंड ऑफ पीपल। जैसे आप अगर घर की कहानी कहोगे तो उसमें माँ बाप सभी होंगे, दादा दादी, नाना नानी सारे ही हो सकते हैं, यू नो। तो वो एक प्लेटफॉर्म जो एक तो लंबा टाइम मिलता है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग वक्त है हम सब के लिए। You have now become a mother-in-law as well, और अब आपकी जो फिल्म फैमिली थी, सेलिब्रेटेड फिल्म फैमिली, सब एक्टर्स हैं, सब फिल्म मेकर्स हैं, अब वो और बड़ी हो गई है। तो conversations at home are about films or they are not about films at all. Even the wedding was like the simplest wedding we have ever seen, but the cutest ever. मतलब बहुत अच्छी। Thank you. तो आइडिया किसका था? कहीं भी फिल्म ये आइडिया, ये जो आइडिया था ये शादी इस तरह करने का, वो बिल्कुल सना और मयंक का था। अच्छा। मयंक एंड सना ने हमें कहा हम ऐसे करना चाहते हैं। ऑन द कंट्री मुझे लगता है हम चारों जन काफी खुद काफी, बिकॉज इतनी नई चीज करने जा रहे थे बच्चे, तो हम चारों को ऐसे लगा कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। वी वर एप्रीहेंसिव अबाउट द होल सेरेमनी और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, मतलब वो इवेंट मैं तो कहूंगी, जो भी आप कहना चाहें उसे। तो वो इनका आइडिया इतना उनका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि नहीं, ये सबको, दिस इज हाउ वी वांट टू डू इट। हम अपने लिए वाउस कहना चाहते हैं, हम अपने लिए ये कहना चाहते हैं, हम एक दूसरे को प्रॉमिस करना चाहते हैं, हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के सामने एक दूसरे को प्रॉमिस करना चाहते हैं, हमें और कोई नहीं चाहिए। तो दिस वाज देयर डिसीजन ऑफ हाउ टू डू इट, एंड I think it worked out very, very beautifully with Master's Grace. So sweet, and it is such an affordable and an example for everyone we all can like learn about. Ma'am, आपने जर्सी देखी है? Like, do you watch films? Yes, of course I do. I watch all the films that I can. I watch all the work that my children do and my husband does. So I mean, I try and watch almost all of it. I think I've watched quite a bit. I've seen maybe more of the work than they themselves have seen of themselves. तो क्रिटिक की तरह देखते हैं या फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा कोई भी काम, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी भी फैमिली मेंबर का हो, मैं एक बार जब काम हो जाता है ना बेटा, और जब रिलीज हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है फिल्म, या कंप्लीट हो जाता है कोई भी शो या कुछ भी, मैं उसको एक ऑडियंस की तरह देखती हूँ। मैं उसमें कोई का कनेक्ट, मैं अपने शोज को भी, अपने काम को भी ऑडियंस की तरह देखती हूँ। और अगर एक ऑडियंस को, मतलब एज एन ऑडियंस मुझे अच्छा लगा तो मैं खुश हूँ, नहीं अच्छा लगा तो मैं बोलने के लिए भी तैयार हूँ कि भाई मुझे नहीं मजा आया। बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन। आई एम नॉट कि अरे ये मेरे बेटे का काम है, या ये मेरी बेटी का काम है, या मेरे हस्बैंड का काम है, तो मैं उस तरह से नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि मैं एज एन ऑडियंस मुझे मजा आना चाहिए भाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आर यू लाइक फ्रॉम द भरतनाट्यम बैकग्राउंड? Yes, I read it somewhere. तो मैम, हमने आपका भरतनाट्यम आज तक क्यों नहीं देखा? Because मैं एक डांसर नहीं हूँ ऐसे। But you have learned it, but you have never. नहीं, I never want. I was never wanting to perform this. I wanted to do my PhD actually. I was on the theoretical side more than this thing. मैं इसको मैं डॉक्टरेट करना चाह रही थी in comparative studies और सारे डांस फॉर्म्स को लेके। तो मैंने बेसिस मेरा ग्रेजुएशन का भरतनाट्यम है, लेकिन मैंने कथक भी थोड़ा बहुत कंपैरेटिव स्टडी के लिए किया था। पर
टाइम ये मतलब पता नहीं, मेरी किस्मत कह लो, जिंदगी कह लो, फेट कह लो, कहीं और थी, तो आई हैड टू मूव दैट वे। मैम जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो क्या ही करेंगे। नहीं नहीं, होपफुली बेटर करूंगी, नहीं कह सकते आप। नहीं मैम, इससे अच्छा नहीं हो सकता है। दिस इज द बेस्ट। नहीं, थैंक This यू is the सो best मच, line. थैंक यू, Good luck for Home Shanti, ma'am. I'm Thank looking you. forward to watch that. Thank you so थैंक much. यू सो मच बेटा, थैंक Nice यू, रियली नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you.